The Darkling Thrush, written by Thomas Hardy. As you know, I will first explain it in English, then I will explain it in Hindi also. So let us start with questioning when, why, and where. So The Darkling Thrush was written by Thomas Hardy in 1899. It was originally titled By the Century's Deathbed 1900. It was published on December 29, 1899. In this poem, Thomas Hardy had described his feelings and also the feelings of an entire nation at the passing of a century and the transition between the Victorian era and the modern era. As we have read in Dover Beach, the Victorian era was marked by intense and rapid change in polity, society, and religious beliefs due to developments in science and technology. These changes created a feeling of hopelessness and bleak future in the poet's mind, which is reflected in the poem. So let us start the poem. I leaned upon Coppice Gate when frost was spectre grey, and winter's dregs made desolate the weakening eye of day. Here leaned is basically to stand by taking support of something, and coppice is an area of woodland in which trees are periodically cut to stimulate growth and provide food, fire, and timber. The gateway here is suggestive of new place and a new century. The act of leaning suggests that speaker is tired and dejected. The poet is outside on a barren landscape on a wintry and frost evening. Here frost is capitalized, so frost is personified over here. The poet has personified frost by giving it human-like characteristics. Here spectre grey basically means that frost made the landscape as grey as a ghost. It proved out to be haunted landscape. It seems that there is no life and the entire world is grey in color. It brings the feeling of cold and darkness in the human being. Winter's dregs are basically leftover bits, and eye of the day is basically setting sun. It is a metaphor figure of speech. When the light of the sun fades, it makes to light desolate, or you can say deserted. So here, the leftover particle of winter make the sun set and the place desertous. The tangled vine stems scored the sky like strings of broken lyres, and all mankind that haunted night had sought their household fires. Here, tangled vine stems are compared to the broken lyre. Lyre is basically a musical instrument which is in U-shaped. So, broken lyres refers that there is no music left in the life of the human being. It signifies the absence of joy and harmony in that era. In the last two lines, the condition of the speaker who is outside is compared to the people who are living comfortably in their home. There are only few people who want to enjoy natural beauty, others only want to live inside their house, warming their fires. So now let us understand in Hindi. तो यहाँ पर जो आपका स्पीकर है वो एक गेटवे के पास खड़ा है जो ये सिंबलाइज कर रहा है कि एक जो पुरानी सेंचुरी है जो 19th सेंचुरी है वो खत्म होने वाली है और जो 20th सेंचुरी है वो आने वाली है। और यहाँ पे फ्रॉस्ट को पर्सोनिफाई किया गया है। फ्रॉस्ट को यहाँ पे एज ग्रे एज अ घोष बताया गया है। मतलब जो फ्रॉस्ट है वो पूरे लैंडस्केप को बिल्कुल ग्रेस दिखा रही है। ग्रे मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन और डिस्पेयर दिखाया जा रहा है। जो विंटर के पार्टिकल्स हैं वो सन को सेट कर रहे हैं और जो पूरा एरिया है उसको डिजर्टेड बना रहे हैं। और जो वाइन स्टेम्स हैं, वाइन स्टेम्स यहाँ पे आप वाइन स्टेम्स बेसिकली वीड्स हैं, अनवांटेड प्लांट्स, और जो उनकी टैंगल वाइन्स मतलब जो मुड़ी हुई वाइन स्टेम्स हैं वो बिल्कुल ब्रोकन लायर के तरीके हैं। लायर एक आपका इंस्ट्रूमेंट होता है जो यू शेप का बना होता है, तो उसकी तरीके हैं। मतलब वाइन स्टेम्स को ब्रोकन लायर से कंपेयर किया गया और यहाँ पे ये सिग्निफाई कर रहा है
कि इंसानियत के जीवन में कोई भी म्यूजिक नहीं बचा है, कोई भी अच्छाई नहीं बची है, केवल सैडनेस ही सैडनेस बची है। और लास्ट की दो लाइनें ये सिग्निफाई कर रही हैं, लास्ट की जो दो लाइनें हैं वो पोएट की कंडीशन को उन लोगों से कंपेयर कर रही हैं जो अपने घर के अंदर चैन से रह रहे हैं, सर्दियों में घर के अंदर आग सेक रहे हैं। और वो लोग ऐसे हो गए कि वो लोग चाहते ही नहीं कि दुनिया की नेचुरल ब्यूटी को देखें, वो अपने घर में कैप्टिवेट होकर रहना चाहते हैं। The land's features seem to me the century's corpse outlined. Its crypt, the cloudy canopy, the wind is death lament. The ancient pulse of germ and birth was shrunken hard and dry, and every spirit upon earth seemed fearless as I. In the second stanza of the poem, there is a description of a landscape associated with the death. Their features of the landscape has been revealed out. The poet has given the century the human-like character. It seemed that the century is dead and the dead body is left behind. There it is a landscape which the speaker is observing. Clouds hanging on the sky seem to be like a tomb over the dead body. The winter wind that was blowing over the tomb is singing the lament song. Lament is basically the sad song. And these lines, these last four lines, basically refers to that seed of spring which are now shrunken, hard and dry. This shows that how the seed is reduced in size, become hard and dry during the winter season. It is suggestive of the fact that the very process of nature are the standstill that the next spring may not come. In these last two lines, the condition of every spirit is being described. Every spirit on planet has become fearless, that is, lacking in position and intensity. It reveals out that the speaker is not just hinting at the death of the old century, but the death of pulse of life that indicates death of hope. दूसरे स्टैंजा में पोएट ने जो सेंचुरी जो 18th सेंचुरी है उसको एक डेड बॉडी से कंपेयर किया है कि मतलब जो 18th सेंचुरी वो मर गई है और उसकी जो डेथ बॉडी है वो लैंडस्केप में पड़ी हुई है और जो क्लाउड है वो उसके ऊपर टॉम टाइप का बना रहे हैं, एक कैनोपी सी फॉर्म कर रहे हैं और जो विंड वहां से गुजर रही है वो सैड सॉन्ग गा रही है, मतलब वो बिलख रही है, रो रही है विंड। और बाद में जो लास्ट की चार लाइनें हैं उनमें पोएट जर्म और बर्थ के बारे में बताता है, मतलब जो सीड्स होते हैं वो सर्दियों में बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं, एकदम हार्ड हो जाते हैं और इसी कारण जो बर्थ रेट है वो रुक जाता है। और यहाँ पे केवल सीड की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे स्पीकर ये भी कहना चाह रहा है कि जो ओल्ड सेंचुरी जो मर रही है, केवल ओल्ड सेंचुरी नहीं मर रही है, उसके साथ जितनी भी इंसान की होप हैं, जितनी भी इंसानों की होप, जितनी भी उम्मीदें हैं नई सेंचुरी से, वो भी मर रही हैं क्योंकि जो विक्टोरियन एरा वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, गांव के लोग शहर में मूव कर रहे हैं, नई नई डिस्कवरीज हो रही हैं, डार्विन थ्योरी आ रही है, इस कारण से जो होप है इंसान के अंदर, जितनी भी उम्मीद बची है वो सारी मर रही है। At once a voice arose among the bleak twigs overhead, in a full-hearted evensong of joy illimited. An aged thrush, frail, gaunt, and small, with blast baffled plume, had chosen thus to fling his soul upon the growing gloom. In the third stanza, the speaker hears an old thrush break out in song. A thrush is a songbird that has a brownish upper plumage and spotted breast. The song that the bird sings is filled with unlimited joy, which is quite contrast to the image of the bird. The song has been referred as evening song. Aged bird refers to the last day of century. The bird is old and weak, perhaps facing its own death, or you can say impending death. Yet it decided to sing a song enthusiastically upon the darkling evening. This is suggestive of both hope and destination. It is an indirect reference to Jesus Christ's suffering and that of the cross, followed by his resurrection,
from the death, bringing hope to mankind. यहाँ पे जब पोएट लैंड के सारे फीचर्स को ऑब्जर्व कर रहा है, उसको डेड बॉडी से कंपेयर कर रहा है, तभी उसको एक सॉन्ग सुनाई पड़ता है। बहुत ही प्यारा मधुर सा सॉन्ग सुनाई पड़ता है। और जब वो देखता है तो उसको दिखता है कि वहाँ पे एक एजेड थ्रश है। थ्रश एक बर्ड होती है, छोटी सी प्यारी सी बर्ड। वो दिखता है कि यहाँ पे एक बूढ़ी सी बर्ड है, बहुत ही कमजोर टाइनी थिन बर्ड, जो कि बिल्कुल बस मरने ही वाली है, लेकिन फिर भी वो इतने ज्यादा उत्साह से ये अच्छा सा सॉन्ग गा रही है। मतलब उसके अंदर कुछ ऐसी होप है कि वो मरने वाली है, लेकिन फिर भी वो ये सॉन्ग गा रही है। ये यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है कि बूढ़ी और कमजोर होने के बावजूद भी जो बर्ड है उसके अंदर कुछ होप है नई सेंचुरी के लिए। So little cause for carolings of such ecstatic sound was written on terrestrial things afar or nigh around, that I could think there trembled through his happy good-night air some blessed hope, whereof he knew, and I was unaware. In the fourth stanza, the poet wondered what could cause the thrush to sing. There was no sign of any joy. The whole scene around was bleak. The poet could not make out the reason of the happy song of the bird. The bird might have some happy expectations, it might have some hope or good fortune which the poet was unaware of. The poem thus concludes on a note of ambiguity. The words "blessed hope" cannot be explained clearly. They seem to express some religious belief, while the poet has no belief in any religion or religious system. Here, hope is personified as it is capitalized. You can see hope is personified as it is capitalized. Hope here suggests that there might be some religious or spiritual reason for the bird's cheerful singing. Hope is personified as if it were a human being giving hope to mankind. Basically, it is an indirect reference to Jesus Christ. तो फोर्थ स्टेंजा में पोएट ये सोचता है कि ऐसी कौन सी चीज है जो इस थ्रस को ये अच्छा सा जॉयफुल सॉन्ग गाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी आसपास का एनवायरनमेंट है ये सब तो ब्लीक है, एकदम डिजर्टेड है, सैडनेस से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी जो ये बर्ड है ये सॉन्ग कैसे गा रही है। जो पोएट है उसको इसका रीजन नहीं पता चल पा रहा है। उसको लगता है कि ऐसी कुछ तो होप है जो इस बर्ड के अंदर है, बट वो जो पोएट है वो उस होप को ढूंढ नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा है कि ऐसी कौन सी होप है जो इस बर्ड को सिंग करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। बेसिकली जो वीक और जो एजेड थ्रस की वॉइस है ये एक प्लीजेंट सरप्राइज है हार्डी के द्वारा। ये एक रिमाइंडर है कि जो डेथ है वो अंत नहीं होता है, डेथ के बाद भी कोई एक लाइफ होती है। द न्यू सेंचुरी इज अबाउट टू टेक बर्थ, मतलब जो 18th सेंचुरी वो मरने वाली है और जो नई सेंचुरी है वो जन्म लेने वाली है। मतलब एक सेंचुरी मर रही है तो दूसरी सेंचुरी जन्म के ले रही है। जो पोएट का पजल्ड रिस्पॉन्स है बर्ड के लिए वो केवल ह्यूमन एंजाइटी को दिखा रहा है। जैसे कि वो नहीं श्योर है कि मतलब वो श्योर नहीं कि जो न्यू सेंचुरी आ रही है वो इंसानों के लिए क्या अच्छी चीजें लेके आएगी, अच्छी चीजें लेके आएगी भी कि जो अच्छी चीजें थी उनको बुरा बना देगी। तो इसी के साथ ये पोयम यहाँ पे खत्म होती है। इतना कहना चाहूंगा। थैंक यू।